जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज हमारे पास 4 स्विच 400 का गैंग बॉक्स है, जिसमें हमारा 15 एम्पर का एसएस प्लेट भी लगने वाला है। तो इसका हम फुल वीडियो आपको आज बना के दिखाने वाले हैं, पूरा कनेक्शन भी आपको करके दिखाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। जैसे कि दोस्तों आप सब देख सकते हो, हमारा स्विच बोर्ड रेडी हो चुका है, जिसके बाद अभी हम इसका कनेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये हमारे पास येलो वायर है, जो कि हमारा यूज करने वाला है। दोस्तों अभी हम लोग न्यूट्रल का कनेक्शन करने वाले हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास ब्लू वायर है, तो हम न्यूट्रल के लिए ब्लू वायर यूज़ करने वाले हैं।
दोस्तों हमारा न्यूट्रल का भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया। तो अभी हम रेड वायर लेके हाफ वायर का कनेक्शन करने वाले हैं। कि आप देख सकते हैं हमारा हाफ वायर का भी कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसको लाइव वायर कनेक्शन देने वाले हैं जो हमारे फ्रिज के निचले हिस्से में है। दोस्तों हमारा लाइव वायर कनेक्शन भी सप्लाई का वायर का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। वायरिंग हमारा कंप्लीट है। अभी हम इसको लाइव केबल का वायर कनेक्ट करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो
हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी हम केबल का वायर कनेक्ट करने वाले हैं। ये हमारा अर्थिंग वायर हो गया दोस्तों, कनेक्ट हो चुका है। ये ग्रीन वायर हमारा अर्थिंग का हो गया, ग्रीन और येलो का। अभी हम लेने वाले हैं न्यूट्रल का वायर, जो कि हमारा ब्लू मीटर हमने बनाया था और ये केबल में ब्लैक है। हमारा लास्ट का वायर जो कि रेड है, सप्लाई के लिए रहेगा। फेस वायर जिसको हम बोल सकते हैं, ये हमारा जाएगा स्विच के अंदर निचले हिस्से में। आप इसको 15 एम्पीयर में डालेंगे तो ज़्यादा बेटर है, तो हम इसके लिए इसको हम डालेंगे 15 एम्पीयर के स्विच में। एक बार हमको अच्छी तरह से सब कनेक्शन चेक कर लेना है कि हमारे सारे स्क्रू सब टाइट है। ठीक है, इसको हमारा बोर्ड कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम पैक करते हैं। देख सकते हैं हमारा बोर्ड कंप्लीट हो चुका है।